वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मैटर्स। मैं हूं सारा अंजुम, आपकी होस्ट, और हम बात करते हैं डॉक्टर अजफर के साथ। आइए हम जाने और यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि व्हाट इज स्किन कैंसर? Skin cancer, basically a type of cancer. It's one of the most common cancers that people can get. Any sore that's not healing, that can not go away within a month or 3 to 4 weeks, it could be a sign of skin cancer. It can range from things like the most common types of skin cancer that are the least dangerous, such as basal cell cancer or squamous cell cancer, to more dangerous cancers like melanoma that can invade the body and cause significant damage and sometimes even death. सो स्किन कैंसर की प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहली बात यह है कि स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए धूप से बचना चाहिए है। हम लोग तो टैन स्किन है, इसलिए हम समझते हैं अक्सर कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली skin cancer can happen in South Asians as well, और उस वजह से, और especially if you've had a history in your life of living in a sunny place, and many of us come from places that are very, very sunny. Yes. तो इस वजह से exposure over a lifetime can contribute to skin cancer. हम समझते हैं कि हमको बर्न नहीं होगा, मगर हमको UV damage होता है. So wearing sunscreen is really important, even for people who have darker skin. सो डॉक्टर ये बताएं कि जो स्किन कैंसर के साइंस हैं वो क्या हैं? जैसे मैं पहले कह रही थी कि आप अगर आपके कोई जिस्म पे सोर है और वो हील नहीं हो रहा है, 1 महीना गुजर गया और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो उसमें से खून निकल रहा है स्पॉन्टेनियसली, या इचिंग या ब्लीडिंग हो रही है अगर आपके कोई मोल से, या उसका साइज शेप चेंज हो रहा है, तो these are all signs of skin cancer. And they should be evaluated by a dermatologist. So prevention के लिए skin to use a sunscreen and go see a dermatologist. Exactly. So you should wear sunscreen every day. Avoid the peak sun, usually between 11 and 3. If you're going to go outdoors, definitely make sure you're wearing sunscreen during that time. And reapply the sunscreen if you're going to be remaining outside for more than an hour and a half. And then check yourself once a month. If you have any new moles that are not looking the same as your other moles, or they're changing in size or shape or color, or if you have a sore that's not going away, or suddenly is itching or painful or bleeding, if something's feeling a little bit different, it needs to be checked. The earlier you find it, the earlier it's caught, the more treatable it is, and we can make, we can save lives. जी, तो सब जब सन में you go out, और जो स्किन जो एक्सपोज हो रही है सन से, we should apply sunscreen on the hands, on the feet, on the neck, as well कि सिर्फ फेस पे, या जो चीज़ जो भी एरियाज आपके एक्सपोज हो रहे हैं, तो अगर कपड़े पहने हुए हैं, लॉन्ग स्लीव्स और long pants, so you don't have to put sunscreen on all of your body, but the parts that are exposed, mostly the face and neck and the arms, especially the face and the neck. Most South Asians will get skin cancer on the exposed parts, which are on the head and neck. And then also one other location where sometimes we forget people can get skin cancer is in the mouth or in the nails and on the bottom of the feet. These are common locations for South Asians to develop melanoma. So check those areas once a month along with the rest of your body. All right, thank you, doctor. Now, आप ये बताएं कि जो skin rash होते हैं, what are those? There's many different kinds of rashes. Rashes is just a general term. So we were talking about eczema and psoriasis earlier. Those are 2 examples of things that can cause rashes in the skin. You can get rashes from heat. Some people can get rashes from allergies to medications or to something in their environment. Some people can have allergies to food that can cause rashes in the skin. There's many different types of rashes. Yeah. और सब कुछ रैशेस होते हैं जो आप खारिश करते हैं, वो रेड हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाते हैं, या कुछ होते हैं जो ओवरनाइट रहते हैं, अगले दिन ख़त्म हो जाते हैं. What are those? It can be many different things. Some people can get hives, जो खुजाने से और ज़्यादा रैश बढ़ जाता है कभी-कभी, और फिर 1-2 घंटे में देखें तो वो गायब है. That's usually hives. Or dermatographism, which is a type of hives, basically कि आपने जहाँ पे scratch किया वहाँ पे line बन गई और फिर वो ख़त्म हो गया. वो अक्सर
कोई लोगों की ज़्यादा उनकी टेंडेंसी होती है और उसके लिए आप अगर मॉइस्चराइज़ कर लें या थोड़ा अगर छोटी सी रैश है और आप उसको बहुत खुजली हो रही है तो आप कोर्टिज़ोन 10 ओवर द काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपको मुसलसल रैशेस हो रहे हैं और आपके ओवर द काउंटर क्रीम से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर, हाँ, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस की वजह से रैशेस हो सकते हैं। जी डॉक्टर, ये बताएं कि पिंपल्स और एक्नी में क्या फ़र्क है? आर पिंपल्स एज एक्नी और पिंपल्स आर समथिंग डिफरेंट? They're the same thing. They're the same thing. Yeah, different Like word. I said about itchiness के कुछ रैश होते हैं, आप इच करते हो, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। कुछ पिंपल्स फेस पे निकलते हैं या बॉडी पे निकलते हैं, तो वो ओवरनाइट ख़त्म हो जाते हैं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, और कोई ज़्यादा दिन के लिए कुछ रह जाते हैं। एग्जैक्टली। हर आदमी की स्किन डिफरेंट होती है, तो कोई लोगों के पिंपल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटोरी होते हैं, कोई लोगों के छोटे छोटे कोमीडोन्स और वाइट हेड्स निकलते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कितने सीवियर एक्नी है, आपकी फैमिली में कितने लोगों किस तरह की एक्नी है, आपके ऑयल ग्लैंड्स किस तरह के हैं, आपकी स्किन पे कितनी बैक्टीरिया है, तो ये सब चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपके कितनी सीवियर आपकी एक्नी है। सो एक्नी कैन बी माइल्ड, उन लोगों के जिसके छोटे छोटे एक आध दाने निकलते हैं, और कोई लोगों के बहुत सिस्टिक और इन्फ्लामेटोरी और स्कारिंग एक्नी भी हो सकती है। वो सब एक्नी है, वो सब पिंपल्स ही हैं। सब पिंपल्स, so pimples and acne are almost the same. They're the same thing. Yeah. जी डॉक्टर साहब, ये बताएं जो ब्लैक हेड्स होते हैं और वाइट हेड्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, so whiteheads and blackheads are a type of acne, and they're basically considered the type that starts the whole process. You can have it's a blocked pore. And if a blocked pore has a little pus on the top of it, it's a whitehead. But if you can see the gunk inside the pore, that's a blackhead. And if those become inflamed, then you call it a pimple. Right. Okay? And if they're really, really deep under the skin, you can call them a cyst. So all of these things are types of pimples, and they can range from the whiteheads and the blackheads all the way to cysts or nodules. जी, ज़्यादातर blackheads nose के ऊपर देखे गए हैं. Why is it that so? It's just because of the anatomy. There's different types of cells in different parts of the face, and there's more oil glands in that area. All right. Thank you, doctor. We were talking about scars. So when pimples are gone, तो वो scars क्यों पड़ जाते हैं और वो treat हो सकते हैं? That's a good question, and I get that question all the time from my patients. But one of the misunderstandings about scars is that people often come to me and say they have scars on their face when they're really only talking about the dark marks that are left behind from their pimples or their acne or from some other inflammation in their skin. Those dark marks, those are called post-inflammatory hyperpigmentation marks, and they will go away with time. It's important not to pick at the skin, because the more you pick at the skin, the more marks you'll get, the more inflammation there will be in the skin. And it's important to wear sunscreen to help prevent those marks from getting darker. And then some people, unfortunately, don't just get dark marks in the skin, but they can also get indented marks in the skin. And that's what a true scar is. That is something that's a little bit more permanent. We can't completely reverse that, but there's a lot of things that we can do to make those scars even better as well. जी, पर साहब ये बताएं कि कुछ लोगों की जो फेस के ऊपर जो स्याहियाँ पड़ती हैं, जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, इट्स आफ्टर प्रेगनेंसी, एंड देयर सम लड़कियाँ हैं जिनको व्हेन दे आर अनमैरिड दे हैव दोज, तो वो कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं? अगेन सबसे पहले जो बात है, ये कंडीशन का नाम है मेलास्मा, और ये अक्सर हार्मोनल होती है. So you'll see it more often in women than you see it in men. Yeah. But even men can get it. But in women, typically hormonal changes, so pregnancy or oral contraceptive pills can be associated with developing these dark spots. And one of the other major causes for this, especially in South Asians, is the sun. So sun exposure and hormones, that combination together makes women more likely to have these spots. But because South Asian men also can have a lot of sun exposure, I've seen it occur in men as well. जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि हेल्दी स्किन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Good diet is important. Healthy, well-balanced diet, drinking lots of water, and I can't emphasize the sunscreen. The sunscreen. Enough. Yeah.
सो कोई क्रीम्स या कोई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए स्किन को साफ़ रखने के लिए या और सॉफ्ट करने के लिए, ये जो हल्के जो दाग पड़ जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए? सनस्क्रीन के अलावा other products that you can get over the counter include should be products that have retinol in them. Retinol, especially at night, a small amount can help to keep the skin clearer, help with fine lines and wrinkles, help with dark spots. That's all helpful. There's other newer products out there that have a little bit of vitamin C, vitamin E, peptides, and other products that are helpful for keeping the skin healthy. जी, और ये जो लोकल स्टोर्स में वो जो फेस वॉश मिलते हैं वो कितने को हेल्पफुल हो सकते हैं on a daily basis? Well, usually I like to keep it simple with the face washes because oftentimes people use scrubs or other irritating products and fragrances in their washes, and then they get allergies or irritation. बेहतर ये है कि आप उसको simple रखें. और मैं अक्सर Cetaphil or CeraVe को recommend करती हूँ इसी वजह से क्योंकि they're very light, they're hydrating instead of drying, and they help to keep the skin clear. Alright, thank you, Dr. Now it's time for a short break. फिर हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और हम और जानेंगे on dermatology.